Now next is the next one is integral of 1 to 2 modulus of x minus 3. Now first put x minus 3 is equals to 0, then the value is 3. Now when x minus 3 is less than 0, that is x is less than 3, then the modulus has negative value. But if we take the second limit, that is when x minus 3 is greater than 0, then x will be greater than 3. But our limits are from 1 to 2, that is x is less than 3. तो इस केस में हम greater than 0 वाला केस नहीं लेंगे. तो क्या होगा, 1 to 2 लिमिट जाएंगी और मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव. क्यों? Because when x minus 3 is greater than 0, then x will be greater than 3. But our limits are 1 to 2. 2 is less than 3. So हम x less than 3 वाला ही केस लेंगे. Minus x square by 2 minus minus plus. Put the limits now. 2 square 3 into 2 minus lower limit. 6 minus 2 is 4. 6 minus 1 5 by 2. 8 minus 5 by 2, that is 3 by 2. Now the next one is integral of modulus of cos 2x dx and the limit goes to 0 to pi by 2. अगर हम cos की वैल्यूज देखें 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए, cos 0 is 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 1 by root 2 and cos 60 1 by 2, cos 90 0. हमारे पास जो इसकी वैल्यू है 90 की तरफ जाते जाते डिक्रीज हो रही है. तो when the function has value 0 to pi by 4, जब हम इसे एंगल हमारा डबल हो जाएगा तो 0 to pi by 4 के लिए जो मॉडुलस है that will be positive and from pi by 4 to pi by 2 then modulus will take negative sign. Or we can see from graph of cos and sin. जब हम cos के लिए ग्राफ बनाएंगे तो cos pi by 2 is 0. अगर हम इसका ग्राफ देखें तो cos pi by 2 पे 0 होता है और 1 मैक्सिमम कब है cos हमारे पास, 1 है 0 पे. cos 0 is 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 पे है, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. इसलिए हमारे पास जो cos 2x है it will take positive sign in 0 to pi by 4 and negative sign in pi by 4 to pi by 2. Now solve this integral. Integral of cos is sin put the limits now. Sin 2 pi by 4, sin pi by 2, sin 0 is 0, 2 into pi by 2 is pi, pi by 2 upon 2. Sin pi by 2 is 1, sin 0 is 0, sin pi is 0, sin pi by 2 is
1. 1 plus half. Half plus half is 1. Modulus of sin x dx limit goes to 0 to 2 pi. अगर हम साइन के लिए ग्राफ देखें, साइन 0 is 0 और साइन is maximum sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. Sin pi is again 0. पाई 2 पाई 3 पाई सब पे साइन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0. So when the limit goes to 0 to pi, then the function is increasing. 0 to pi में साइन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मॉडुलस ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू साइन x. पाई से 2 पाई में साइन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसलिए नेगेटिव. Integral of sine is minus cos x minus cos x. Cos pi, cos 0, cos 2 pi minus cos pi. Cos pi is minus 1, cos 0 is 1, cos 2 pi is 1, cos pi is minus 1. 2 plus 2, 4. Next is modulus of sin x dx and the limit goes to minus pi by 4 to pi by 4. sin x को जब हम 0 लेंगे, sin 0 is 0, so first interval goes to minus pi by 4 to 0 and second goes to 0 to pi by 4. जब हमारे पास माइनस पाई बाय 4 से 0 की तरफ इंटेग्रल आएगा, देन फंक्शन इज नेगेटिव. और जब 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 2 इज हियर, इधर क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. और अगर इंक्रीज हो रहा है तो हियर मॉडुलस ऑफ साइन इज पॉजिटिव. नाउ इंटेग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस. इंटेग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस एक्स 0 to pi by 4. Cos 0 minus cos theta, cos pi by 4 minus minus plus cos 0. Cos 0 is 1. Cos of minus theta is cos theta. So cos pi by 4 is 1 by root 2 minus 1 by root 2 cos 0 is 1. 1 plus 1, 2 minus 2 by root 2. टू अपॉन रूट 2 को हम रूट 2 भी लिख सकते हैं, so we can write it as 2 minus square root of 2.
Now the next one is integral of modulus of x minus 5 and the limit goes to 2 to 8. First put x minus 5 is equals to 0. X is 5. 5 lies between 2 and 8. So modulus of x minus 5 will negative when x minus 5 less than 0. And function has positive value when x minus 5 is greater than 0. That is x is greater than 5. First limit goes to 2 to 5. When x is less than 5, function has negative value minus x plus 5. And when the limit goes to 5 to 8, function has positive value. Solve the integral minus x square by 2 plus 5x plus x square by 2 minus 5x. Limit goes to 5 to 8. Put the limits now. Upper limit minus lower limit. Eight square. 8 into 5. 5 square. 5 into 5. Now solve it. Minus 50 minus 25. 10 minus 2 is 8. 40 minus 32. Minus 50 plus 25. 25 by 2 minus 8 plus 25 by 2. 25 plus 25, 50 by 2 minus 16. 25 minus 16, 9. Next one is integral of sine modulus of x plus cos mod of x dx. Limit goes to minus pi by 2 to pi by 2. Since this function is an even function, f of minus x is equals to f of x. Modulus of x is also x and modulus of minus x is also x. So function is sin x plus cos x. Since the function is even, then integral minus a to a fx dx is equals to 2 times 0 to a f of x dx. Now integral of sine and integral of cos is sine. Cos pi by 2 plus sine pi by 2 minus lower limit cos 90 is 0, sine 90 is 1, cos 0 is 1 and sine 0 is 0. 2 into 2, 4. Next is integral of modulus of x minus 1, x minus 4 and the limit x minus 1 limit goes to 0 to 4.
This you can try it by yourself. First the limit goes to 0 to 1 and then 1 to 4. Its answer is 5. Now the next one is integral of modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 4 and the limit goes to 1 to 4. सबसे पहले हमारे पास जो भी फंक्शंस हैं इन्हें 0 के इक्वल रखने पे हमें मिला x1, x2 and x4. Now our lower limit starts from 1, so 1 से 2. अगर हमने हमारा फंक्शन की लिमिट 1 से 2 के बीच में है, when x is greater than 1 but less than 2, अगर x हमारा 1 से बड़ा है then modulus of x minus 1 will positive, but 2 से छोटा है. अगर 2 से छोटा है then this modulus will negative. अगर 2 से छोटा है तो obviously 4 से भी छोटा होगा, then this is also negative. x minus 1 minus x plus 2 minus x plus 4 minus x plus 5. तो हमारे पास फंक्शन आ गया minus x plus 5. अब नेक्स्ट इज 2 to 4. अगर हमारे फंक्शन की लिमिट्स 2 से 4 के बीच में है, x is greater than 2. अगर कोई भी टर्म 2 से बड़ी है तो 1 से भी बड़ी होगी, तो 1 का मॉडुलस पॉजिटिव, 2 का मॉडुलस पॉजिटिव, बट वो 4 से छोटी है. 4 से छोटी है तो दिस मॉडुलस विल बी नेगेटिव. x प्लस 1. तो हमारे पास फंक्शन आ गया x प्लस 1. अब हमारे फंक्शन की लिमिट्स कहां से कहां जाएंगी? पहली 1 to 2, then function has value minus x plus 5 and the second interval goes to 2 to 4 and the function has value x plus 1. Now solve the integral. Minus x square by 2 plus 5x, x square by 2 plus x. Put the limits now. 2 square 5 into 2 minus lower limit 1 square 5 into 1. Upper limit 4 square plus 4 minus lower limit 2 square. 10 minus 2 is 8. 10 minus 1 9 by 2. 8 plus 4 12. 2 plus 2 4. 8 plus 8 is 16 minus 9 by 2. 27 by 2. 16 minus 2 is 32 minus 9 is 23 by 2.
0 modulus of x plus modulus of x plus 2 plus modulus of x plus 5 dx। इसके लिए भी सबसे पहले हम फंक्शंस को 0 के इक्वल रखेंगे। By putting them equal to 0, we get the value of x as 0, -2 and -5. -5, -2 and 0. Integral limits start from -5. So first limits will be when the value of function lies between -5 to -2. X is greater than -5. -5 से तो बड़ा है बट -2 से छोटा है, तो इट मीन्स 0 से भी छोटा होगा, तो मॉडुलस ऑफ x इज नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज ऑल्सो नेगेटिव, बट -5 से ग्रेटर है, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 विल बी पॉजिटिव।